Meet Santosh, the silver jewelry artisan who's been hammering, molding, and risking his life for 30 years. He used to work with his dad, but now he's the family's one-man money machine. You know the classic I do it all hero, except his superpower is making shiny coins, not saving the world. मैं ये काम तो करीबन 30 साल हो गए। 30 साल में आप यहीं अपने घर से इधर से काम कर रहे हैं? हाँ, अपने पिताजी के साथ। अब मेरा पिताजी तो स्थायी है, 15 साल हो गए, वो कमरे में नहीं है, चलते फिरते नहीं है, सब मैं ही देखता हूँ। The Karigars have these ancient stamps they've been using since forever. It's like the original DIY kit for coins. What's written on the coin? Something in Arabic. No one, not even the shop owner Manoj, knows what it means. But hey, why bother when it's been a tribal fashion staple for decades? If it's not broken, don't fix it, right? मनीष सनी नाम है मेरा। लगभग 20 साल हो गए ये ज्वेलरी शॉप खोले हुए मुझे। और जैसा कि आपने बताया ये नेकलेस के बारे में, इसको मोहर कहते हैं। गौड़ आदिवासी और यादव समाज के जो लोग हैं पुराने, वो ट्राइबल एरिया में जो है गांव के एरिया के, वो लोग आज भी इसको पहनते हैं। ये सिक्का जो है, ये जो ठप्पा बना हुआ है, ये ठप्पा बहुत पुराने ज़माने का ठप्पा है। ये इसमें जो लिखी हुई है अरबी भाषा में लिखा हुआ है, और इसका आज तक किसी ने कुछ बताया नहीं है। अब अरबी भाषा तो हम लोग जानते नहीं है, हम लोग बस जब से हमारे पास आए हुआ है और ये थप्पा रखे हुए हैं और इसका यूज़ करके हम लोग बना के बेचते आ रहे हैं। ये अरबी भाषा लिखा हुआ है इसमें। सालों साल से ये थप्पा चल रहा है, आज भी वही चल रहे हैं, चेंजेस नहीं हुआ है इसमें कुछ भी। After the fancy embossing, Santosh smooths the edges like he's grooming the coin for a date. Next, it's time to whip up the loop for the pendant. He takes a chunk of metal, beats it into the required thickness, and molds it into a circle using fire. Every little element going on the mohair is made from scratch by Santosh. Nothing is pre-made, and he is responsible for making all silver parts of the entire piece. You know, just a casual Tuesday for Santosh. He even makes a cute little bead to sit on top of the loop. The bead, although it looks small, consumes a whole 15 minutes to make it perfectly. This design required making just one bead, but sometimes a karigar would be required to make more depending on the design. More sparkle, more drama in Santosh's life. और रहा सवाल हमारे श्रीमती का, वो अभी थोड़ा नाराज़ है। वो अभी अपने माता पिता का सेवा कर रहे थे। वो मैं क्या बिल्कुल सेवा करूँ। Let's talk about that later. Now let's talk about the part where Santosh proves he's a total daredevil. He dips the coin into acetic acid with his bare hands. No gloves, no problem. Just your average, oh I might lose a hand today situation, but hey, the coin gets all shiny afterwards, so it's totally worth it, right? Then he gives it a nice bath with soap and water, just like you'd scrub your face after a long day of bad decisions. He ends up doing this work on repeat for 24 hours. अरे मेरा मत पूछो, मैं तो 24 घंटा काम करता हूँ, कोई टाइम टेबल नहीं है। 11 बजे भीड़ गया तो अभी तक के करूँगा 6 बजे तक, 6 बजे बाद बंद। मन पड़ गया तो रात के फिर 9 बजे करूँगा, 12 बजे बाद बंद। 3 घंटा कम से कम आओ, तभी तो सामान समय में पहुँचेगा। Once the coin's all pretty, he weighs it because the weight equals the price. Today's rate is 93 rupees for 1 gram. The coin weighs 11 grams. You do the math or let Santosh do it because he's probably better at it anyway. I decided to get nosy and took off my necklace to see how much that would cost to make. आप किसी भी दुकानदार को दोगे, समोसा दुकान वाले को दोगे, तो एक समोसा देंगे आपको 7 रुपए में। मैं सुबह से पहन के घूम रही हूँ, ये समोसा है। समोसा नहीं, समोसा मिलेगा इसमें, बस इतना ही मिलेगा। हाँ, 1 पीस। ये चांदी नहीं है, डालडा है। और डालडा जो है क्या है, ये रुपया है, ये चलने वाला है। भारत सरकार का सिक्का है ये तो, 7 रुपया है। For the final assembling, the coins are sent to another karigar who threads them into a necklace, that is the mohar. He takes a cluster of black threads and adds the silver pendants in it one by one. Once the placement of the coins is set, he ties the coin in its place on both sides of it so they don't move around. He wraps up the black threads neatly so the threads also don't disperse. Once all the threads are locked in, the mohair is ready for its moment of glory.
Then off I went to see Manoj, the shop owner, to ask about the silver masterpiece. पुराने तोले में चलता था ये। पुराना तोला कहलाता था कि आज के ज़माने में 11 ग्राम 660 मिलीग्राम जो होता है वो एक तोले में बनता था। तो एक तोले के हिसाब से ये 9 माला की बनी हुई है। इसका पर कास्ट कहना चाहिए ये 11 ग्राम 660 मिलीग्राम है। तो आज के डेट में 900 रुपीज़ इसका तोला चल रहा है। तो लगभग 1200 रुपये पड़ता है एक पीस का। तो टोटल कास्ट होता है 12 नियम 108, लगभग 11,000 का ही पड़ रहा है ये एक माला पूरा। तो ये क्या है, वैल्यू इसकी ज़्यादा रहती है। ये प्योर 100% बनता है और इसमें कोई भी टाका का यूज़ नहीं करते। इसमें रिटर्न वैल्यू इनकी ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए इसका उपयोग उन लोग ज़्यादा करते हैं। ये गोल्ड में भी आता था, सिल्वर में। गोल्ड तो पूरा आउट हो चुका है, कुछ लोग रिच फैमिली वाले पहनते हैं। He also had some thick anklets called toda, which are these thick, sturdy anklets that are spotted at Santosh's place. And let me tell you, these things look like they could double as ankle weights for a hardcore workout. ये तो बिल्कुल आउट हो चुका है। इसको पैर में पहनने का ये टोड़ा है, पहनना चाहिए। आज की डेट में पायल कहते सकते हैं। तो पुराने ज़माने में लोग इसको पहनते थे। ये भी ऐसा पोले रूप में बनता है, 40 से 50 तोला के बीच में लगभग बनता है। ये 2-3 साल में कोई कहीं ग्राहक पुराना आ गया तो इससे जरूर से लेता है। ये प्योर चांदी में बनता है। The Oraon tribe still rocks the Mohar and toda like it's 500 years ago, keeping the tradition alive. And Manoj's shop, Jewratan Metals, is the place to score all the silver swag. But don't worry if you're not into coins, there's plenty of other shiny stuff to get your hands on. Bling for days. If you like this video, please don't forget to subscribe to my channel and let me know in the comments which necklace is your state famous for. My name is Ishita Mangal and I'll see you next time. Bye.